Yesterday we couldn't take the lecture due to certain problems, but we will continue now from today. So interference, already we have conducted about 3 lectures. In short, I will tell you what we had discussed. We had seen interference basics like constructive destructive interference, then equivalent optical path, Stokes law, thin and thick film, and we had started with very important article, that is interference in thin films of uniform thickness. The 2 assumptions. Then we had seen diagram completely, step by step. We have understood this diagram. Then we had seen the derivation part of this. तो हम जो देख रहे थे कि एक थीन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म अगर आपके पास है, थीन यूनिफॉर्म, all of you mute your mics, all of you mute your mics. स्कूटी घेऊन जाणार होता ना. ओके, सो एक थीन फिल्म हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोप फिल्म. एक्चुअली सोप फिल्म जो भी एग्जांपल मैं देता हूँ ना, सोप फिल्म हो या फिर ऑयल की फिल्म विच इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, या फिर थीन कोटिंग ऑन अ मटेरियल, तो ये जो एग्जांपल्स है ना, तो दीज आर नॉट एक्चुअली यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी थिकनेस जो है ना वो चेंज हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, एक आइडियल कंडीशन देख रहे हैं. सो आइडियली अगर ऐसे आपके पास एक फिल्म है जिसकी थिकनेस कांस्टेंट है, तो इन दैट केस तो इंटरफेरेंस कैसे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज है तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कैसे होगा. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम एंड वी हैव रिटन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन इन द लास्ट लेक्चर. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास जो एक रे आता है ए बी, it will get partly reflected, partly refracted, again reflected. So hence we get the ray 1 and ray 2 in reflected system, and these two rays will interfere in your eyes, and whether it will be constructive or destructive, it all depends on the path difference between the two rays. That is the only criteria, that is path difference is the only criteria which will decide whether that interference of this ray 1 and ray 2 is constructive or destructive. And therefore we have dedicated that one lecture completely to find out this path difference. So from geometry we have found that the path difference between ray 1 and ray 2 comes to be mu into BC plus CD minus BG. Then using geometry and certain arithmetic, we found out the value of this BC, CD and BG. We then put all these values here in this equation number 1, and finally we got this particular equation, that is delta is equal to twice mu t cos r. And I have also told you that this particular path difference depends on three factors here, that is refractive index of the film. Okay, understand here delta means what? Delta means path difference between ray 1 and ray 2. So ये जो path difference है वो किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है refractive index of the film, ये डिपेंड होता है thickness of the film, और ये डिपेंड होता है angle of refraction. So angle of refraction ultimately depends on angle of incidence. यानी कि अगर आप ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हो, ओके, अभी एक थिन फिल्म आपने ली तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट ही होगा. ओके, थिकनेस मोस्टली कांस्टेंट होगी लेट्स से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आप इजीली वेरी कर सकते हो. एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने वेरी कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वेरी हो सकता है. ओके, means by just controlling the angle of incidence you can change whether there will be constructive interference or destructive interference in the reflected system. Okay, have you understood till this? Yes sir. sir. Okay, we'll proceed then. सी ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो. हमने जो फाइंड आउट किया है पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2, वो हमारा आता है ट्वाइस म्यू टी कॉस आर. ओके, बाय हार्ट ही करना है इसको.
This is very important here because it will be for derivation as well as for MCQs as well as for numericals. Okay, so ये जो फॉर्मूला है ये important है. Actually यहाँ पे जो है ना ये इक्वेशन नंबर 4 हमें देता है पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2, और ये जो डेरिवेशन हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया उसके लिए हमने यहाँ पे एक अजम्पशन कंसिडर किया था कि if a light travels through a material with refractive index mu, then its equivalent optical path will be mu d. वो जो इसका assumptions था वो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यूटिलाइज किया था, और एक हमारा assumptions था. Anybody remember that second assumption? Stokes law. Stokes law. Okay, very good, correct. Can you tell me that? What is that Stokes law? Anybody? Anybody? What is Stokes law? When light incident on the thin film, then the phase difference and path difference is. And condition क्या है उसके लिए? Lambda by 2 path difference and phase difference pi. नहीं, ओ होने के लिए, ओ पाथ डिफरेंस या फिर ओ फेज डिफरेंस होने के लिए कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? टू डेंसर मीडियम में वेव ट्रैवल करना चाहिए. करेक्ट. ऊपर अगर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो इन दैट केस अगर रे ऊपर से नीचे ऐसे आता है एंड रिफ्लेक्ट होता है, देन एंड देन देयर विल बी पाथ चेंज ऑफ लैम्बडा बाय 2 और फेज चेंज ऑफ पाई ऑकर्स, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो अभी ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये डायग्राम में लेट्स से पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है. ठीक है, तो हर जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है. तो मुझे बताओ कि अभी कौन से रेज है जहां पे, ओके कौन से नहीं बोलूंगा मैं, नाउ यहाँ पे टेल मी, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रे 1 का, तो रे 1 के लिए वो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है क्या, यानी कि वहां पे पाथ चेंज ऑफ लैम्बडा बाय 2 होगा क्या? रे 1 के लिए पाथ चेंज लैम्बडा बाय 2 अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ होगा क्या? यस और नो? यस सर. Yes, sir. Okay, your answer is correct. Yes. Now tell me, अभी दूसरा जो रिफ्लेक्शन होता है ये नीचे जाता है ट्रांसमिट होके, एट अ पॉइंट सी अगेन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड हियर. जो रे सी डी है तो उसमें पाथ चेंज लैम्बडा बाय 2 होगा क्या? रे सी डी जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उस रिफ्लेक्शन में पाथ चेंज लैम्बडा बाय 2 होगा क्या? नो सर. नो. सो योर आंसर इज करेक्ट. एट पॉइंट सी यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे पाथ चेंज नहीं होगा, बिकॉज लाइट इज गेटिंग इंसिडेंट ऑन द रेयरर मीडियम एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट रेयरर मीडियम. सो यहाँ पे पाथ चेंज एट पॉइंट सी देयर विल नॉट बी एनी पाथ चेंज. सो पाथ चेंज विल ओनली ऑकर एट अ पॉइंट बी, यानी रे 1 के लिए पाथ चेंज होगा लैम्बडा बाय 2, बट रे 2 जो यहाँ पे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है यहाँ पे और फिर ट्रांसमिट हो जाता है. सो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस रे 2 देयर इज नो पाथ चेंज ऑफ लैम्बडा बाय 2 ऑकर्स. ओके, तो ये फैक्टर हमें हमारे पाथ डिफरेंस में भी कंसिडर करना होगा. सो इक्वेशन जो 4 है वो एक्चुअली इज नॉट ए करेक्ट इक्वेशन. So we have to correct this equation using Stokes law assumption. So if we implement this Stokes law assumption, then we have to add or subtract a path change of lambda by 2 from this final path difference.
This is for a reflected system, remember this. But for transmitted system, you will find that ray CC dash or EE dash don't face Stokes law, or there is no Stokes law applicable to these rays CC dash and EE dash, because for these rays, that is CC dash and EE dash, there is a no reflection from denser to rarer medium. So denser यहाँ पे कैसे हो रहा है? Denser to rarer, rarer to denser टू रेयर, ऐसा यहाँ पे हो रहा है रे 1 के लिए, तो वहां पे पाथ चेंज होगा। ऐसी सिचुएशन बाकी कौन से भी रे के लिए नहीं है। ओके, तो जो ट्रांसमिटेड सिस्टम है वहां पे हमारा स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। And therefore that is what is the difference between the reflected system और transmitted system. So reflected system और transmitted system में सिर्फ यही एक फर्क है स्टोक्स लॉ का। बाकी ज्योमेट्री अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो सिमेट्रिक ज्योमेट्री है। ओके, दो रे ऐसे जा रहे हैं, नीचे भी दो रे ऐसे जा रहे हैं, और एक रे जो है ऐसे यहां से निकल रहा है, दूसरा रे एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रहा है ऐसे ऐसे। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में भी क्या हो रहा है, पहला रे यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली निकल रहा है और दूसरा रे नीचे फिल्म में आता है और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाता है। सो you will see that geometry of this reflected system and transmitted system is same. The only difference is about Stokes law, and therefore Stokes law is applicable only in the reflected system and not in the transmitted system. Is that clear? Yes, sir. Okay, so equation 4 हमारा जो path difference आया था उसको हम correct करेंगे using this Stokes law, and therefore for reflected system change of path of lambda by 2 occur at B. At B यानी कि कौन सा पॉइंट, ये वाला, ये देखो पॉइंट B ध्यान में रखो। सो दिस इज पॉइंट B। साइमल्टेनियसली नोट डाउन में नोटबुक में नोट डाउन भी करते रहो, तो वो रेफरेंस के लिए और आपके स्टडी के लिए भी काम आ जाएगा। ओके, दो आई विल शेयर द पीपीटीज मैं शेयर करूंगा ये, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टिल यू हैव टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइमल्टेनियसली आल्सो, and if you want some space some time then also you can ask me. All right, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में यहाँ पे एट अ पॉइंट भी देयर इज ए पाथ चेंज ऑफ लैम्बडा बाय 2 होता है बिकॉज ऑफ स्टोक्स लॉ, एंड देयरफॉर आवर पाथ डिफरेंस जो डेल्टा था दैट विल बी नाउ करेक्टेड एज 2 म्यू टी cos r प्लस और माइनस लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेटेड पाथ डिफरेंस आया था वो ट्वाइस म्यू टी cos r आया था, लास्ट स्लाइड में हमने देखा। और हमने क्या किया, स्टोक्स लॉ का ये लैम्बडा बाय 2 पाथ चेंज जो है यहाँ पे प्लस और माइनस हमने किया। प्लस माइनस यानी कि क्या, आप प्लस भी कर सकते हो इसको या फिर माइनस भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम। एंड नाउ यूजिंग दिस पाथ डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट द ब्राइटनेस एंड डार्कनेस कंडीशंस। सो लेट्स फाइंड आउट द कंडीशंस फॉर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम। फर्स्ट वी विल सी कंडीशन फॉर ब्राइटनेस. Now already we have discussed for constructive interference the path difference delta should be equal to n lambda. In terms of words, what we call this? Path difference is equal to anybody remembers? In terms of words, no one remembers. Constructive interference. नहीं, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इंटीग्रल मल्टीपल, एन लैम्बडा डायरेक्टली बोल रहे हम, एन लैम्बडा सिंबॉलिकली बोल रहे एन लैम्बडा। इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स हम बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि एक वेवलेंथ जो पाथ डिफरेंस है, दो जो रेज है हमारे रिफ्लेक्टेड, दोनों के बीच का अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 लैम्बडा है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। देन पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। 3 लैम्बडा 3 इंटू वेवलेंथ 3 लैम्बडा रहेगा तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो यहाँ पे n की जो वैल्यूज है आप यहाँ पे इंटीजर यानी कि पूरा नंबर लाइक 0 1 2 3 नॉट फ्रैक्शन, ऐसा अगर हम लेते हैं इन दैट केस देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द फाइनल स्पॉट where the interference will occur will be bright. So
this particular path difference is the condition. Now we will equate this delta path difference with the equation that we have got here, with the value that of the path difference that we have got here during that derivation. Okay, so equation number 5 और ये जो है हम equate करेंगे. So we can write here twice mu t cos r plus or minus lambda by 2 equal to n lambda. Okay, दोनों को हमने equate कर दिया. Now I will take this lambda by 2 on the right hand side and it will become twice mu t cos r is equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. Have you understood this or not? If you are not understood, I will explain this. How is it coming? Have you understood this equation, last equation, or shall I explain this? Sir, please explain. Okay. तो ये कैसे आ गया तो देखते हैं अभी. Okay, so I will write this equation twice mu t cos r is equal to n lambda. अभी यहाँ पे जो प्लस और माइनस है that I will take on the right hand side, और यहाँ पे आप माइनस प्लस करो प्लस माइनस करो, it doesn't matter here in this case, प्लस माइनस lambda by 2 is equal to, now what we will do, lambda by 2 अगर हमें कॉमन निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा. सो हियर इट विल बी, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2n होगा प्लस और माइनस 1 लैम्बडा बाई 2. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो आ रहा है इक्वेशन, तो ये सही है या गलत है ये आप चेक कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग दिस ब्रैकेट बाय दिस लैम्बडा बाई 2. लैम्बडा बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसिल हियर, n इंटू लैम्बडा आ जाएगा एंड 1 की जगह यहाँ पे लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? मीन्स यू विल गेट दिस इक्वेशन. ओके, Yes, sir. तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये इक्वेशन आ जाता है दैट इज 2n प्लस और माइनस 1 लैम्बडा बाय 2. यहाँ पे अभी आप खुद चेक कर सकते हो, प्लस सिर्फ लेते हैं तो क्या होगा, सिर्फ माइनस लेते हैं तो क्या होगा, वो भी आप चेक कर सकते हो. ओके, लेट्स सी हियर, सिर्फ प्लस लेके देखते हैं. सो ट्वाइस म्यू टी कॉस आर प्लस lambda by 2 is equal to n lambda, and therefore twice mu t cos r is equal to n lambda minus lambda by 2 and is equal to, अभी यहाँ पे उस I will multiply by 2, it will be 2n minus lambda by 2 and out of bracket, sorry यहाँ पे 1 आएगा, okay, 2n minus 1 and this is lambda by 2. lambda by 2 कॉमन निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको और ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 लिया तो यहाँ पे 1 रहेगा. ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड इस तरह से आती है, और अगर हम यहाँ पे माइनस लैम्बडा बाई 2 राइट की तरफ लेते हैं, यानी कि ट्वाइस म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2 अगर लेते हैं तो इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एंड देयरफॉर ट्वाइस म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा. ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा. सो दिस इज अ प्लस लैम्बडा बाई 2 एंड देयरफॉर इट विल बी 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2. ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यहाँ पे ये देखो, ये जो सिंबल है, साइन है, वो माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है, तो ओनली दैट डिफरेंस इज देयर. तो आप कौन सा भी चूज कर सकते हो, प्लस माइनस यानी कि क्या, दोनों ऑप्शन आपके पास है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फाइनल इक्वेशन आता है यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए, तो इस तरह से आता है.
So twice mu t cos r is equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. तो यहाँ पे अभी प्लस अगर आप लेते हैं, if you take plus here, then your n value will start from 0. अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हो तो n की वैल्यू 0 से नहीं स्टार्ट होगी, बल्कि किससे स्टार्ट होगी? 1 से. 1 से. करेक्ट. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हियर. क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है और n की वैल्यू आप 0 लेते हो तो 0 माइनस 1 यानी कि ये माइनस निगेटिव आ जाएगा. ओके, तो वो निगेटिव ना आने के लिए हम क्या करते हैं, अगर माइनस है तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और प्लस है तो देन n विल स्टार्ट फ्रॉम द 0. इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो ये छोटी छोटी बातें हैं, अच्छी तरह से आपको याद रखनी है. देन आफ्टर दिस ब्राइटनेस कंडीशन वी विल फाइंड डार्कनेस कंडीशन. And now it is very easy because we have found out this brightness. So for darkness, destructive interference के लिए path difference कितना होता है दो वेव्स के बीच? Two n plus 1. 2n plus 1 lambda by 2. Okay, वो path difference होता है. So see, for darkness, path difference delta is equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. ये path difference होता है. And therefore we will equate this path difference delta with equation number 5 का जो हमारा path difference. ये path difference हमारा derivation से आ गया था और ये जो path difference delta यहाँ पे मैंने अभी लिखा है ये वाला, तो ये standard path difference होता है darkness के लिए. ओके, यानी कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अगर इतना है देन इट विल बी डार्कनेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, तो हमें डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन चाहिए, डार्कनेस की कंडीशन चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों जो पाथ डिफरेंस है उनको इक्वेट करेंगे. दोनों अगर इक्वेट है तो ही डार्कनेस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सो देयरफॉर वी विल इक्वेट दिस टू डेल्टा एंड आई विल राइट हियर ट्वाइस म्यू टी. ये देखिए इक्वेशन नंबर 5 आई विल राइट हियर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस और माइनस लैम्बडा बाई 2 एंड इक्वल टू ये वाला जो मैंने लिखा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस आता है वो दैट इज 2n प्लस और माइनस 1 लैम्बडा बाई 2. नाउ टेकिंग दिस लैम्बडा बाई 2 ऑन द राइट हैंड साइड आई विल गेट ट्वाइस म्यू टी cos r इक्वल टू n लैम्बडा. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, you have got this, that is very good thing. Other students, have you got this last step? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Anybody want more explanation of this or not? Yes. Anybody want more explanation about this last step or Yes, not? sir. Yes. Yes, Yes? sir. You want? Yes, sir. Okay, ठीक है. देखो अभी यहाँ पे again what I will do, I will take this here. So twice mu t cos r plus or minus, हम क्या करेंगे अभी, only will take let's say plus, ठीक है, plus lambda by 2 is equal to 2n. अभी यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, प्लस ले लो माइनस ले लो, क्या ले लो यहाँ पे, 2n और 1 के बीच क्या ले लूँ मैं, एनीथिंग आई कैन टेक. Plus. Plus. ओके, प्लस, ठीक है, लैम्बडा बाय 2. ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट हियर ट्वाइस म्यू टी cos r इज इक्वल टू, अभी इसको एक्सपांड करेंगे ये राइट हैंड साइड को, ब्रैकेट को. सो 2n इंटू लैम्बडा बाई 2
is n lambda plus this is lambda by 2, lambda by 2. now this is माइनस, ये जो आएगा यहाँ पे इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, so minus lambda by 2. okay, so this will get cancelled with this one, and what you will get finally is twice mu t cos r equal to n lambda. So this is what is our last equation. Is that clear? Yes, sir. Okay. So we have obtained the brightness and darkness conditions here. Now these equations are very important, especially ये जो yellow वाली है, yellow नहीं, दोनों भी actually important है, जो highlighted equations है, ये blue वाली और ये yellow वाली, दोनों equation आपको fix करने हैं दिमाग में. ओके, कितनी भी बार repeat करो, revise करो. ओके, twice mu t cos r is equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. Twice mu t cos r is equal to n lambda. Okay. Can anybody speak this with this speed? Somebody speak out this equation. This way, this equation. 2 mu t cos r equal to n plus 1 lambda by 2. 2 mu t cos r equal n lambda. Very good, very good. ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको और आपका स्पीड बढ़ जाएगा उसमें बोलने के लिए. ठीक है, ये भी अच्छा है, स्पीड अच्छा है, गुड, वेरी गुड. सो ये इक्वेशन जो है अच्छी तरह से बाय हार्ट करने हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. दिस टू इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Now after reflected system we have to write the conditions for transmitted system also. Okay, for transmitted system. Now already I have explained you कि transmitted system और reflected system दोनों symmetric है geometrically, तो उनका जो पार्ट डिफरेंस आता है that is twice mu t cos r वो भी सेम होता है, but only difference is रिफ्लेक्टेड सिस्टम में स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में देखो लैम्बडा बाई 2 जो है प्लस माइनस किया था, लेकिन वो जो केस है, वो जो पॉइंट है, वो ट्रांसमिटेड सिस्टम में नहीं आता है. एंड दैट इज व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम. एंड देयरफॉर ट्रांसमिटेड सिस्टम में जो पाथ डिफरेंस आता है, जो ट्रांसमिटेड रेज है उनके बीच का पाथ डिफरेंस आता है ट्वाइस म्यू टी कॉस आर ओनली. ओके, यहाँ पे प्लस और माइनस लैम्बडा बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि स्टोक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांसमिटेड सिस्टम. सो दिस इज व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर ट्रांसमिटेड सिस्टम. And therefore we can write the brightness condition. Again, brightness condition, path difference should be equal to n lambda. Equating this n lambda with equation number 4, we will get 2 mu t cos r equal to n lambda. Have you got this? Any question? No, sir. Okay, equation So 4. this is for transmitted system, right? Yeah. Yes. Pardon? Can you repeat? Sir, it is for transmitted system. Previously it was for darkness. That's Yes. why. Yes. Your initially you got confused, isn't it? Yes, sir. Now everything will be clear, don't worry. That's why I have highlighted this particular equation with the same colors, and that is what is the actually difference and similarities. And therefore I have written this derivation or the equations simultaneously in front of each other, so that you will easily understand and you can easily remember, or you can correlate between these reflected equations and transmitted equations. All right, now darkness. For darkness, the path difference again is equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. Equating this delta with the delta we have obtained using derivation, we will write twice mu t cos r is equal to 2n plus or minus
1 लैम्डा बाई 2। ओके, यहाँ पे अभी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इक्वेट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे फाइनल मिल जाता है। सो इन दिस वे वी हैव गॉट द brightness and darkness conditions for transmitted system. Now, what are the similarities between reflected and transmitted system? Similarity बोलो या फिर differences बोलो, whatever is that, what are the correlation between these equations for reflected and transmitted system you observe? Anybody? Somebody speak. For reflected system, Stokes law is applicable, and for transmitted system, Stokes law is not applicable. So therefore, in reflected system, we have to add the change of path, that is lambda by 2. Okay, that is theoretically we have seen. I want the correlation of these four relations, four equations. फोर इक्वेशन आपके पास है अभी जो हाईलाइटेड फोर इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, तो वो आपके सामने है, तो उनके बीच का कोरिलेशन या फिर कुछ कंक्लूजन आप उससे निकाल सकते हो क्या? सर वाइस वर्सा है। थोड़ा बड़े बड़े आवाज में बोलो। सर वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा मतलब जो कंडीशन रिफ्लेक्शन में ब्राइटनेस के लिए है वही उसकी अपोजिट ट्रांसमिटेड में। ओके, ब्राइटनेस में जो कंडीशन है रिफ्लेक्टेड में ब्राइटनेस की जो कंडीशन है वो ट्रांसमिटेड में कौन सी है? darkness. Darkness. Very good, very good. That is what I was expecting here. So you will see that it is like cross. Reflected की brightness की condition is the same as the darkness condition for transmitted system, और reflected की darkness condition is same as that of the brightness condition for transmitted system. तो शॉर्ट में अगर इसका कंक्लूजन देना है तो मैं इस तरह से बता सकता हूं कि ध्यान से सुनो, conditions of brightness and darkness in reflected and transmitted system are exactly opposite. I repeat, the conditions of brightness and darkness in reflected and transmitted system are exactly opposite. So this is the conclusion of this particular equations or this particular derivation. तो यहाँ पे हमारा जो derivation है वो finish होता है. So these equations are very very important, स्पेशली रिफ्लेक्टेड सिस्टम की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसमिटेड में नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, ट्रांसमिटेड के बारे में मोस्टली रिफ्लेक्टेड के बारे में ही पूछा जाता है. तो अगर थ्योरी पेपर है आपका, अभी मैं थिंक आपका थ्योरी पेपर होगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज़. तो नॉर्मली अगर थ्योरी पेपर होता है तो थ्योरी में आपको पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ता है. ओके, जो ये था अजम्पशंस था, देन डायग्राम थी, देन पिछली स्लाइड वाला डेरिवेशन था पूरा, प्लस ये रिफ्लेक्टिव सिस्टम का ये डेरिवेशन, ये 6 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है लिखने के लिए. ठीक है, मतलब थ्योरी एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन अगर होती है तो इन दैट केस, अगर आपकी ऑनलाइन टाइप ऑफ द टेस्ट होती है तो वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे. जैसे कि आपको 4 इक्वेशन दिए जाएंगे और उसमें से आपको बोला जाएगा कि विच इज द करेक्ट कंडीशन फॉर ब्राइटनेस इन रिफ्लेक्टिव सिस्टम. आपको कंफ्यूज किया जाएगा. तो आपको अगर सही पता है, सही नॉलेज आपके पास है, देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड यू विल गिव द करेक्ट आंसर. हेलो, यस. All right.
आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, रिफ्लेक्टेड सिस्टम होती है, सी एक रे आ गया, उसके दो रे मिल गए आपको, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकली एक रे आता है कि आपको नहीं, एक रे हमने इसलिए एनालिसिस के लिए लिया, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर एक कोई सोर्स है तो वो सोर्स जो है वहां से बहुत सारे रेज आते हैं, सपोज 100 रेज कम, देन 200 रेज विल गेट रिफ्लेक्टेड, ओके। और अगर इंसिडेंट रेज का एंगल यानी कि पैरेलल है तो ये जो ट्रांसमिटेड रेज है वो भी पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मीन्स इफ यू सी द फिल्म फ्रॉम टॉप, ये जो फिल्म है अगर ये टॉप से आप देखोगे यहाँ से तो आपको क्या दिखाई देगा, समझ लो जरा। सो इन दैट केस अभी देखो सारे रेज पैरेलल है, यानी कि अगर ये दो रेज के बीच का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो जो भी बाकी के पेयर्स है उनके बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, यानी कि जो पूरी फिल्म है वो पूरी फिल्म ब्राइट दिखाई देगी, ओके। अगर ये दो रेज के बीच अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बाकी के सारे जो रेज है उनके भी पेयर का जो इंटरफेरेंस रहेगा वो डिस्ट्रक्टिव रहेगा, यानी पूरे की फिल्म जो है आपको पूरी डार्क दिखाई देगी, ओके। So in such a uniform thickness film you will observe the complete film as a completely bright film or the dark film। पूरी फिल्म एक तो ब्राइट दिखाई देगी या फिर पूरी फिल्म जो है डार्क दिखाई देगी, वहां पे कोई भी पैटर्न या फिर कोई फ्रिंजेस आपको दिखाई नहीं देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म। अगर आपको इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस देखने हैं इन केस ऑफ द फिल्म, देन यू नीड नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म, जो कि हम बाद में देखने जा रहे हैं, ठीक है। Now I hope everybody is clear with this first article. Now we'll start the second article here, wedge shape or non uniform thickness film। Am I audible to all? Yes sir। Yes sir। Okay, अभी देखते हैं wedge shape और non uniform thickness film क्या होती है। So see, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि ऐसी फिल्म जिसकी थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, ऐसी फिल्म, ओके। अभी ऐसी फिल्म जो है वो कौन से भी मटेरियल की हो सकती है, कौन से भी यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल की हम कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि हम लाइट कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसी जो फिल्म है नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस वाली फिल्म, वो आपकी ग्लास की हो सकती है, वो आपकी एयर की हो सकती है, वो आपकी लिक्विड की हो सकती है, एनीथिंग, ओके। यहाँ पे अभी एक मैं सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे कि आप एक वेज शेप फिल्म ऑफ एयर आसानी से बना सकते हो। कैसे करना है देखो, उसके लिए आपको एक ग्लास प्लेट लेना पड़ेगा ऐसे इस तरह से, देन ऑन वन साइड यू हैव टू कीप वन स्पेसर, स्पेसर यानी कि द स्मॉल ऑब्जेक्ट विच कीप्स स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेसर आपको रखना है, एंड देन अगेन वन मोर ग्लास प्लेट यू हैव टू पुट हियर लाइक दिस। नाउ यू विल सी दैट इन बिटवीन द टू ग्लास प्लेट्स, okay, apart from this spacer, what is there in between the two glass plates? Apart from this spacer is what? Air। Air, correct, very good, correct। so दोनों ग्लास प्लेट के बीच क्या है, अभी एयर है। अभी वो जो एयर है उसका अगर शेप आप ड्रॉ करोगे 3 डायमेंशनली, so that will become somewhat like this। I will take it out and this particular shape जो बन गया है, that is now the non uniform thickness air film। this is also called as wedge shape air film, wedge। now in our Indian kitchen अभी भी या फिर पहले बहुत यूज किया करते थे एक पर्टिकुलर छोटा सा ऑब्जेक्ट जो कि हम खाते वक्त हमारी जो प्लेट थी उसके नीचे रखते थे, ओके। उसी तरह का ये शेप है, इजंट इट? ज्याला मराठीमध्ये वटकर म्हणतात आपल्याकडे, हा, तर त्यालाच वेज म्हणतात, वेज इंग्लिशमध्ये वेज म्हणतात, ओके। सो दॅट पर्टिक्युलर शेप इज कॉल्ड एज अ वेज। this is called as a wedge shape, okay। this is very famous shape that is called as a wedge shape, and not just in optics, in so many places you will encounter with this particular word wedge। so what is a wedge shape? Wedge means one side is thin and other side is thick, that is called as a wedge shape।
तो इस तरह से हमारी जो एयर फिल्म है इस तरह से बनती है और दैट इज कॉल्ड एज वेज शेप फिल्म। नाउ यहाँ पे भी जो एंगल है, सो सी this particular side where the thickness is minimum, that is called as edge of the wedge, and the angle between the two surfaces, top surface and bottom surface, is called as a wedge angle। तो यहाँ पे वेज एंगल आपको जो है मेजर करोगे तो वो कितना ही दिखाई देगा अराउंड, कैन यू गेस हाउ मच एंगल इज दिस? 30 डिग्री। वेरी गुड, सो अराउंड 30 डिग्री का ये एंगल है, वेरी गुड। बट प्रैक्टिकली जो हम इंटरफेरेंस के लिए कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इतना एंगल नहीं चलेगा, क्योंकि ये हो गई थिक फिल्म। थिक फिल्म में इंटरफेरेंस नहीं होता है। थिन फिल्म के लिए आपको जो है बहुत ही पतली फिल्म होनी चाहिए, इसलिए आपका जो वेज एंगल थीटा होता है दैट शुड बी, आई विल से, लेस देन 1 डिग्री। इतना वो छोटा होना चाहिए, देन एंड देन यू विल ऑब्जर्व द वेज, देन एंड देन यू विल ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न इन दैट केस। अभी इंटरफेरेंस कैसे होता है उसमें, it's somewhat like this: alternate bright and dark fringes you will observe here when monochromatic light falls। ऊपर से इस असेंबली के ऊपर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरती है, लेट्स से सोडियम वेपर लैम्प, इन दैट केस यू विल सी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क। अभी यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ये व्हाइट की जगह आप येलो कंसिडर करो, तो इस तरह से येलो डार्क तरह के अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। और more detail about this we'll see in the next lecture